welcome back to my YouTube channel. It's been a very long time since I have uploaded the last video. So here I am today. I'm going to talk about like how to use rose quartz roller and gua sha. Basically, I have purchased this in rose quartz. It looks like this. Let me show you. It looks like this. This is gua sha and this is roller. बेसिकली ये मैंने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल में ख़रीदा है. इट इज़ मेड अप ऑफ क्रिस्टल से थोड़ा कॉस्टली होता है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ओरिजिनल क्रिस्टल. सो एंड आई वांट टू टेल यू गाइस कि जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, दे हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द एनर्जी. जो भी आसपास की एनर्जी होती है, दे हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द एनर्जी. ओके, और उसमें भी एनर्जी होती है. सो इट्स बेटर टू get your rose quartz or roller from any Reiki healer. Like, I would suggest you guys to go purchase it from some good Reiki healers because it has energies and it really affects your mood, your mind, everything. Whatever is going through in your mind, it is going to absorb it. And one more thing I want to tell you guys before starting, before starting out the video, I just want to make sure that every misconception should be cleared. So it is basically used for like lymphatic drainage. Basically gua sha is used for nighttime skincare routine and the roller for the daytime skincare routine. It helps you to like sculpt your face. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि लाइक gua sha से कोई स्कल्पटिंग नहीं होती, बट आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि इट लिटरली हेल्प्स टू लिफ्ट योर फेस एंड इट इज़ रियली गुड इन दैट. उसमें यहाँ पे लिखा भी है कि मसाजिंग द रोज क्वार्ट्ज स्टोन कैन हेल्प वर्क द टिश्यू ऑफ द फेस एंड जेंटली रिलैक्स द मसल्स. दिस लीड्स टू रिड्यूस पफीनेस, swelling and inflammation. It can also help in lymphatic drainage, release any toxic buildup and improve circulation. This reduces the appearance of wrinkles, fine lines, dark circles and more. So basically मुझे तो बहुत ज़्यादा dark circles है, so that's why it would be very helpful for me to use it. It improves the elasticity of your face and it improves the blood circulation in your face so that you can look more younger in your 40s or 50s. If you are into your 40s or 50s, so I would highly recommend you guys to go for it. Otherwise it's all okay. You can massage it through your fingers like this and this, but you have to learn the techniques how to do it. Okay, so let's get started with this video. First things first, I want to tell you guys कि ये जो बना होता है ना, ये crystals से बना होता है. Like it's a stone. It's originally a stone. Like it's a rose quartz crystal and it has the energy. So I would highly recommend you guys to not share with your mother, your sister or your friend because we never know what they might be going through. What if your friend has been gone through a severe breakup? I mean, बहुत ही ज़्यादा बुरी ज़िंदगी चल रही हो उसकी, फ़िलहाल उसका ब्रेकअप हुआ हो and she has been going through a bad breakup phase and बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही हो और तुमने उसके साथ अपना रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल या फिर gua sha और रोलर उसके साथ शेयर कर लिया. सो माइंड यू कि इसमें लाइक टेंडेंसी होती है एनर्जीज अब्जॉर्ब करने की. सो वो उसकी एनर्जीज उसमें जाएगी और फिर तुम उसको खुद पे यूज़ करोगे तो वो एनर्जी तुम में ट्रांसफ़र होगी. सो इट्स बेटर कि तुम इसको पर्सनल रखो, किसी के साथ यूज़ मत करो. अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मदर और सिस्टर भी ये यूज़ करें तो मेक श्योर टू गिफ्ट देम. लाइक क्रिस्टल्स गिफ्ट करना एक बहुत अच्छी बात होती है, बट मेक श्योर कि तुम अपना क्रिस्टल किसी के साथ शेयर मत करो. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू लाइक अट्रैक्ट लव, अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, एनहांस सेल्फ लव. सो दैट इज़ वाई आई बॉट इट. ये काफ़ी दूसरे क्रिस्टल्स में भी आता है, लाइक मून स्टोन में भी आता है. मून स्टोन क्रिस्टल इज़ यूज फॉर द मूड स्विंग्स एंड ब्यूटी एंड बहुत अलग उसके बेनिफिट्स हैं वो क्रिस्टल यूज़ करने के. और एक जेड में भी आता है. जेड क्रिस्टल ग्रीन कलर का जो होता है, जो जेड gua sha एंड जेड रोलर आप जो देखोगे वो ग्रीन कलर में होगा. उसके बेनिफिट्स अलग है. सो रिसर्च इट कि आपको कौन सा क्रिस्टल खरीदना चाहिए. वाई आई हैव परचेज द रोज क्वार्ट्ज बिकॉज मुझे मेरा सेल्फ लव और सेल्फ लव है और क्या कहते हैं उसको, मुझे मेरा
वो वाला जो गेम है उसको अप करना है, लाइक सेल्फ केयर. आई वॉन्ट टू अप माई सेल्फ केयर गेम. दैट्स वाई आई हैव परचेज्ड इट. सो इट्स ऑल अप टू यू गाइज कि कौन सा क्रिस्टल लेना है. So let's talk about the benefits of using gua sha and roller. So basically it helps in your lymphatic drainage and it helps to improve the blood circulation of your face. I mean जैसे blood circulation हमारे body में इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत होती है, वैसे हमारे स्किन पे भी काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि लाइक वहाँ पे भी वेसल्स है, वहाँ पे भी आर्टरीज एंड वेन्स है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वहाँ के भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो. लाइक वहाँ पे भी टॉक्सिन बिल्डअप होता है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमें एक्ने, पिगमेंटेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स से सामना करना पड़ता है. आई नो कि दैट पिगमेंटेशन लाइक पिगमेंटेशन तो कम नहीं होगा वैसे, लाइक पिगमेंटेशन का तो अलग ही रोल है, बट वी कैन रिड्यूस दी एक्ने. सो वही टॉक्सिन बिल्डअप से हमें इससे राहत मिलती है एंड इट डज स्कल्प्ट योर फेस. लाइक येस इट डज. So because it lifts your face when you use gua sha and roller on a regular basis, it does lift your face. Okay, so let's begin. To begin with, I'm going to use this rosehip oil by Plum and I'm going to apply it all over on my face before using before using the tools. So I'm going to massage it through my hands. I'm going to spread it on my hands and then I'm going to use the gua sha, and for that I'm going to use cheeks first. I'm going to use the longest part of the gua sha to make a firm stroke from the side of the nose, following the contours of the cheekbones up towards the hairline on both sides. I'm going to do it for quite some time, and then I'm going to use the heart-shaped side of the gua sha, start at the chin and slide at the stone up towards the ear on both sides. Use one of the heart-shaped curve of the gua sha to massage under the eye by sweeping it from the inner corner to the outer corner of the under eye. Use the longest part of the gua sha to make a firm stroke from the side of the nose, following the contours of the cheekbones up towards the hairline on both sides. Start from the eyebrows and slide the longest straight part of the gua sha up towards the hairline in firm strokes. With the side of the gua sha that is curved inside, slide up from the collarbone towards the jawline and press the stone at the top for a few seconds. We are going to repeat the steps to the other side as well. Now we are going to use the roller. Place the broader end of the rose quartz roller and roll from the side of the nose to your ear on both sides. Use the smaller end of the rose quartz roller and roll from the inner to the outer corner of your under eyes. Start from the middle of your forehead and make upward strokes with your rose quartz roller as you move towards your ears on both sides.
place the broader end of the rose quartz roller at the front of your neck and roll it down till the base of the neck. So yeah, that's how we are going to do our full face. So yeah, we are done. Thank you so much for watching. Please do subscribe for more such videos.